Hello, guys, and welcome back to the channel. It's an international break. Other than the football, a lot of things has happened over the weekend. Um, Rafael Nadal has retired. So basically, guys, the reason why I brought up Nadal is it's a chill stream. Okay, we are just gonna be talking randomly in and around the football or anything, whatever we feel like. We will see how you guys like it or not. If you guys don't like it, then we might not repeat it in the future, or we might be arrogant and repeat it in the future. It depends upon how the mood is for us. But this is not your weekend review. The weekend. Apologies for the introduction, by the way, guys. Why? Why? It is Why should I? so I said random. it's a chill. Exactly. That's what the chill stream is all about. You're supposed to be भाई मैं random. लेटा हुआ था साले यार तू जब तूने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी. Hey, I didn't started the recording. You started the recording. They don't need to know that. So, guys, let us know how's your weekend going, man. But for us, it's not going that great. And we hate अबे वीकेंड international चालू हो football. गया 2 दिन निकल गए साले अभी वीकेंड पे अटका हुआ है तू. हाँ पर weekend कैसा था? Let us know. कैसा था? क्या किया तुम लोगों ने? Because I think international football भी था नहीं. a chill stream requires a new background. I'm changing that. Yeah, you can do that. Mm. But we were generally talking about a point which is सही better to अच्छा bring लगा. it up right now. Yeah, this is nice. Um, Oh नहीं, we can it's even go with this. Yeah, guys, check out our backgrounds. We're paying a hefty amount to these people. So, guys, Rafael Nadal has retired. Let's talk a little bit about Nadal. I don't care about what do you say, Tennis tennis. Yeah. and Nadal. मैं देखो honestly बोलूँ, I used to despise Nadal because I was a big fan of Federer. Big fan नहीं बोलूँगा, मतलब I used to like Federer, and then जब मैंने first couple of matches, if there was a time when Federer could not beat Nadal, मतलब he tried his best trying to beat Nadal everywhere. Australian Open, US Open, सब जगह try किया, but Nadal would always get the better of him. And there was, I think, I watched an entire match, Nadal versus Federer. I think it was the Australian Open, if I'm not wrong. So that, अच्छा तू अपना background change कर रहा था. Yes. So yeah, so I think Federer lost, and I think he started crying after he lost. So I felt pretty bad for Federer, not Nadal. Sorry, I Federer. mean, yeah. And then even Nadal started crying, and I remember our friend Maharshi was there, and he said कि Federer just took the entire limelight from Nadal by just weeping. And That's what then happens when a great man, like you remember the Italy versus France World Cup, जब Zidane को red card मिला था. Even though Italy won the World Cup, the headlines were Zidane got the red card. So it depends. Zidane though is a whole different. I mean, I think No, I France mean or Zidane that dono hold a that very important role. I think. no, I mean that image is iconic now. Yeah, where Yeah, yeah. Italy, like he's walking past the World Cup, like it's like very very iconic. So it's like that is very very, what do you say? It holds a weird place in my heart. मेरे को एक्चुअली जब ये हुआ था ना वर्ल्ड कप, उसके बाद ही मेरे को यूट्यूब भी यूट्यूब वाज इंट्रोड्यूस्ड. ओके, मेरे को एक वीडियो बनाना था यार, एक एनिमेशन वीडियो ऑन Materazzi. Materazzi is the guy that Zidane get the header. Headbutted. हाँ, तो मेरे को उस पे ये बनाना था कि Materazzi कोई भी रैंडम मैच में पहले पहले टैकल किया, रेफरी ने सीधा कुछ देखा नहीं, रेड कार्ड. ठीक है, Materazzi को. फिर ऐसे ही किसी और बंदे ने उसकी टीम में टैकल किया, रेफरी ने घूम के Materazzi को दिया रेड कार्ड. फिर Materazzi बेंच पे बैठा है, रेफरी बाहर आके उसको रेड कार्ड.
माटराजी क्राउड में बैठा है, उसको बाहर आके रेड कार्ड, मतलब मेरे को ऐसा एक वीडियो बनाना था. क्या Because I बकवास. hated that bastard so much after that. I remember I was watching this match live, and I think I was watching in DD1, क्योंकि I think तब वो लोग live दिखा रहे थे, सेमीफाइनल फाइनल में ओपनिंग मैचेस वो दिखाते थे लाइव डीडी में. एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे पता ही नहीं वो क्या हुआ, मुझे नहीं समझ में आया हुआ क्या हुआ, मेरे को समझ में ही नहीं आया. लाइक बिकॉज आई वाज लाइक कि ये, आई मीन आई वाज शॉक्ड इन अ वे कि लाइक क्या कर दिया जिडान ने. लाइक अच्छा खासा सब चल रहा था, ऑल ऑफ अ सडन अ रेड कार्ड, एंड देन It was एंड crazy, crazy, crazy game. and I एक think तो Andre हेडशॉट. also missed the penalty in that match. So that is आई where थिंक सो. it got, yeah, so that is where it got really crazy. And I think Zidane उसके बाद scored a कैनवारो Penenka that game. या जिडान Zidane scored a वो Penenka. गोल में रख के अंदर गया था. And Cannavaro got a Ballon d'Or also, I think, next season. अबे One of the क्या very कौन few सा? defenders. Cannavaro Fabio got a Cannavaro. Ballon d'Or. Cannavaro got the Ballon d'Or, I think. उनका ये इटली का कैप्टन एंड डिफेंडर. I think he's अरे equivalent to मुझे what पता है कैनावेरो कौन है. Martinez का ही height है, I think. या ऑलमोस्ट थोड़ा 19-20 का फर्क होगा. अभी यार मैं अभी ये कंपेयर करने कंट्रोवर्शियल कोई बोलने चालू कर जाएगा कि ली चार्ज नाउ कैनावेरो, ये वो. रहने दे ना तू यार. मैं कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स में कमेंट नहीं करना चाहूंगा. एक तो वो But यार तुम speaking तो speaking of controversial topics, guys, did you hear that Sir Alex Ferguson just got? I mean, how do you say fired his again. contract? Got fired No, fired again. He was fired again from politely. United. I I saw 10 So साल can you बाद please, उसको बंदे को so 10 can साल you बाद please फिर fuck off? निकाला इन लोगों ने. तू वापस जा भाई, तू आए, तू जा अब. सर first क्या of आप all, he यहाँ was से दफा never हो सकते हो? As first of like all he was politely never I'm saying. fired पहले. अब मेरे को यूके थोड़े, मैं अभी यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था तो आई सॉ सम channels stating that he's been fired before ETH. Yeah, dude. Like that Fucking is like crazy. how Yeah, insulting can one can be to Sir Alex said yes. yeah. The thing is, I don't think it's that controversial. It's just media houses wanting to put United in the news because that is what gets them views. United sells, United news sells, so that's why United news में है फिर से. So yeah, that's about it. I don't think it'll be a big deal. कुछ But होगा I नहीं think ज़्यादा. it's a very good. I think see, if I look at the positive, I think it's a good thing to do because uh, yes, Jim Ratcliffe wants to make sure that whatever the mean is to get the club in a proper way. I think he's trying that. We'll not go much deeper into this because we have gone quite, like we have discussed quite a few around this topic in the past few weeks, and it's been a never-ending क्या topic. मतलब, I am now done with United banter. मतलब दया आती इन लोगों पे. ठीक है. दया तो I नहीं think आती है, कर्तव्यों का फल है ये तो, और तो कुछ भाई नहीं है. देख, मेरे को मतलब yeah, बट obviously I am happy with what is happening with मेरे को United, but I'm एक just saying. संत आदमी ने बोला था किसी पे दया नहीं खानी चाहिए. It एग्जैक्टली, happens to you then. सी वी हैव बीन इन दैट मेरे को आर्सेनल पे दया पोजीशन. आती थी, मेरे को लिवरपूल पे दया आती थी. अब हमारी हालत देखो. अब तो हमें दया भी नहीं आ रही है, सीरियसली, बिकॉज I don't know, yeah. I saw your. By the way, guys, we just want to bring one thing which we won't be able to bring in the preview, but we had a recent collaboration with a group called, with a channel, sorry, called Sadaji and Sports with Sadaji and friends. Sports with Sadaji and Friends. I'm so sorry for that, guys. So, where an in-depth discussion around ETH happened. The Yeah, lovely you can friends Do over check there that are video out, also, guys. link. Yeah. You Yeah, can find it's the one link of to the that video in the description. it's yeah. one of the many collabs we are looking forward to this year. Season's gonna be long and full of terrors for United, so I'm gonna keep. Lovely people. Uh, uh, Absolutely. Pity that they support Manchester United, but overall, good people. no, they have other fans as well on their channel. These were just the two panelists that supported They were United. just the two panelists, yeah, and Yeah. हमारे बंदे भी गए थे
इस लड़ाई में। भले लड़ाई दोनों एक तरफ से ही हो रही थी, लेकिन लड़ाई तो हो ही रही थी। इट्स लाइक हाँ, दो द आर्सेनल वर्ल्ड के वर्सेस फैंस द थे जो मैनचेस्टर कर रहे यूनाइटेड। थे, थोड़ा ट्राई कर रहे थे, पता नहीं, थोड़े फीके पड़ गए बिकॉज अपेरेंटली यूनाइटेड फैंस एज ऑलवेज आर वेरी लाउड। या वेरी लाउड एंड चेल्सी, ये आर्सेनल, लंदन क्लब्स वाले जो थोड़े है ना, वो क्या बोलते हैं, थोड़े इज्जत वाले हैं कि या थोड़ा आराम मुझे से बात लेकिन करते हैं, थोड़े मुझे कल्चर्ड लोग हैं, इनको अपने लेवल पे लेके आना पड़ता है. यू नो हाउ द जोकर सेड टू बैटमैन, what I did with Harvey was I brought him down to our level. amazing line. It's such an Yeah, amazing, it's an amazing movie also, guys. amazing movie. By the Amazing way, movie. वीक पे क्या किया तुम लोगों ने यार? मतलब मैं, so after a long time I finally finished a game, like a single player game. There is a game called Sifu that you can, if you are subscribed to PlayStation Network, you get it for you. I got it for free like 3-4 months back. It's called Sifu. It's like a, how do you call it? It's like a platformer, maybe rogue like game. Okay. Kung fu है इसमें. It took Okay. me it took me a month to finish this game, even though this only had 5 levels. I'll tell you why it took me a month to finish. First of all, I only played on weekends. और उसमें भी 2-3 weekends छूट गए. The game is about, यूनाइटेड it's a very परफॉर्म कर रहा simple, था। it's a very simple story. It's a revenge story. All right. हम्म। Uh, these group of people go back and kill their master. ओके, एंड मास्टर का जो बेटा होता है, ही इज ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ दैट मास्टर ऑफ कोर्स, एंड ही डिसाइड्स टू टेक रिवेंज ऑन दी स्टूडेंट्स आफ्टर ही बिकम्स 20. All right. So you go through 5 levels, get to those 5 students. They are the final bosses of that game. And the game story is simple. The good part is the combat. It's fucking amazing. It's so fast. And the best thing about the game was its death mechanic. कि अगर तू मर गया ओके। राहुल, गेम में हाँ। अगर मर गया, all हाँ। right, you will age. एज। Okay, let's say you die once from one guy. Okay, so you, and if you decide that you want to continue from this point, then you will age 1 year. Okay. uh, and if you decide कि नहीं मेरे को ये लेवल वापस स्टार्ट करना है, तो you start from the beginning. बिगिनिंग। ओ गॉड। Okay, ठीक है. And if you keep dying again and again, all right, let's say वो बंदे ने मेरे को एक बार मारा, 2 बार मारा, 3 बार मारा, 4 बार मारा, and I keep continuing, I will age by that multiplication. So let's say I start with 20. Okay. If I ओ died 4 times to that guy, then after the fourth death, I'll be 28. 8। ओके। Okay. So I have, like, I can only age up till 70, uska game over. Guys, I'm When you least start लाइफ। interested again. because I finished this game like an year ago और मोहित ने अभी start किया, इसलिए I'm so uninterested in this topic. But Rahul, if you get a chance, play I'll this get a game. chance. I need to first reach home. I'm not yet reached home. Whenever you do that, it's, I think even I'm if it's gonna not do free, that. it's going to be a very cheap game. No, Finish I'm it. gonna do Good. this. You're actually right because I'm not gonna invest my money in FC25 this season. Yeah. Um, I know चुप it. because It's got pretty one of my pathetic reviews. चुप yeah, one चुप of my चुप very close तुम friend who is तुम very good कुत्ते in this लोगों, game. तू और मोहित, विजय और कौन है हमारे ग्रुप में, मिहिर, ये सब साले हरामखोर लोग, जैसे ही आती है गेम तुम लोग को जो थोड़े दिन बाद ऐसे हाथ में खुजली होती है और तुम नहीं लोग नहीं, ये मैं नहीं पैसा करने दे वाला। देते हो। नहीं, मैं नहीं करने मैंने वाला लास्ट because ईयर भी मैं खरीद रीजन के रख बता रहा दी. हूँ। आई डिड नॉट प्ले FC20 कोर. I'll tell you a बट यू reason पेड also. देम द मनी ना। No, Yeah, I'll tell see, you the I reason. actually want to do game streams on this channel as well. So if people are नहीं interested, नहीं, they वी want वी आर that, I नॉट can. वी आर नॉट डूइंग We गेम will do that. स्ट्रीम। मैं आ रहा हूँ उसमें। Why वैसे not? मैं लास्ट एक सेकंड गाइस, मैं बोलने तो दो। Last one of my very close friend, he is very good in this game by the way, and he also hates the game as much as I do. And उसने ना लास्ट ईयर उसने पूरा एक वो रिकॉर्ड करके रखा है कि ये गेम कब इंटरेस्टिंग बनते हैं और ये लोग फ्री कब करते हैं. So around January the game becomes interesting, and around December the game gets free.
जब वो 25 क्रिसमस वाला जब वो पीरियड आता है प्ले स्टेशन नेटवर्क में फ्री फ्री मिलता तो है. नहीं होगा, प्राइस ड्रॉप आएगा तब मेरे भाई. आई थिंक प्राइस ड्रॉप अपने दिवाली के टाइम में आएगा, लेट दिवाली, एंड देन आई थिंक फ्री होगा मैक्सिमम टिल जनवरी. आई एम होपिंग कि ये गेम फ्री होगा. And the reason why I am so keen to do this way is because this guy didn't play it for 3 months because he was going through some personal thing, something like what you were going now, Uh, and he didn't got the time, and then he started it around January, and his team in the end was 99. Not a single player was 98. Every fucking body in his team was 99. हाँ मतलब Pele, it's like Rice. I have also played with, I have also, like I'm sure तूने भी खेला है, right? Ultimate Team. राइट, मैं वही खेलता हूँ और और कुछ खेलते ही हाँ, नहीं. मैं भी अल्टीमेट टीम खेलता था, बट टू थिंग्स यार. इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी फकिंग एडिक्टिव. इट इट्स डिमांड्स वेरी अ लॉट ऑफ एडिक्टिव. टाइम. या. इट डिमांड्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड आई फील, मतलब मैंने भी 1-2 साल ना लेट चालू किया था अल्टीमेट टीम. बट मैंने ये देखा कि even if you start late, there are so many objective and so many players that या. come into games. So it doesn't really, it's, I mean, you get a first mover advantage. तुमको game mechanics ज़्यादा पता चलते हैं, ये होता है वो होता है. But I think even if you start late, I don't think it really matters in FIFA. It really matters because right now they haven't introduced anything, out of like out of the box, something which they did last year. They brought the evolution. Like if you have a player, you can play a little bit objectives and everything, and the player increases. For example, अगर तेरे पास DRB है, तो अगर 5 मैच खेलेगा उसको इवॉल्व करेगा तो 84 से 88 हो जाएगा, फिर 90 हो जाएगा, फिर 92 हो जाएगा, विच दे बॉट. सो विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. सो अगर तेरे पास पहले से कोई प्लेयर है तो वो एक फैक्टर आ जाता है, बट आई थिंक वो ये सीजन भी होने ही वाला है. So that introduction, other than that, there is no other introduction into this game. I want this game to improve, which it's not. It's improving. Last year it was pathetic. It was really pathetic. अगर विजय होता तो मैं और विजय बहुत in depth में डिस्कस कर सकते थे, but विजय नहीं है. Even Vijay got fed up. And मेरे Last को year उसका तो मैंने खेला ही नहीं यार FIFA, so I don't know any mechanics or anything. आई थिंक टीम ऑफ द सीजन जब भी रिलीज होता है उसके बाद तो इट्स लाइक एन ऑटो मोड. एवरीबडी इज लाइक अ ह्यूमन गॉड इन दिस गेम, एंड Because तुम लोग everyone has बस that team. एवरीबडी हैज दैट कार्ड, एंड इट्स लाइक अ बास्केटबॉल मैच. मैं इधर आ गया तो मैं गोल मार के जाऊंगा, तू इधर आ गया तो गोल मार के जाएगा. डिफेंडिंग तो भूल ही जाओ, होने से रहा. By the way, क्या क्या देखा यार, मतलब इंटरनेशनल वीक था तो कोई मूवीज या सीरीज देखी होगी. मैंने और उत्तू ने एक सीरीज फिनिश की, बाय द वे. हमको अच्छा लगा वो. एप्पल टीवी पे देयर इज दिस सीरीज कॉल्ड प्रिज्यूम्ड इनोसेंट. आई सजेस्ट यू चेक इट आउट. इट्स गुड. जेक जिलेनॉल है. इट्स लाइक अ 8 पार्ट, लाइक मिनी सीरीज बोलते हैं जो एक ही सीजन होता है. नहीं, लिमिटेड सीरीज. हाँ, लिमिटेड सीरीज या. हाँ हाँ लिमिटेड हाँ, चेक इट सीरीज. आउट. इट्स बेस्ड ऑन अ मूवी दैट केम आउट. पहले हैरिसन फोर्ड था उसमें. वो ग्रुप, मुझे Uh, ग्रुप में वो नाम लिख देना whenever you get time. yes, yes. Presumed innocent. It's a very Presumed interesting innocent. story. Okay. Huh. Jake Gyllenhaal is a district attorney. I think so, district attorney, and he's caught up in some case. So it's a very very interesting thing. We got hooked by episode 4. I mean, we Oh, got hooked in the first episode itself, but we took it slow. Like बुड्ढे हो गए यार थोड़े, तो जल्दी नींद आ जाती है, तो मैं बहुत एपिसोड जल्दी देखते नींद आ देखते सो जाती गए. है गाइस, बहुत जल्दी हाँ नींद तो आ जाती है. नहीं, तो दोनों की यू बातें नो हम सुन के लोग. मेरी नींद आ रही है ना. वरुण, तूने क्या इंटरेस्टिंग किया मेरे भाई? मेरा इंटरेस्टिंग वीकेंड, लेट्स सी. सैटरडे. सैटरडे. ये लास्ट वीक 2 वीक में तो गरबे भी चल रहे थे अहमदाबाद में, तो वरुण गरबों में गया था. कपल ऑफ मैं गरबे. तो ओह मैं गर्मियों में भी हाँ. गया था. अभी. वेयर वी लड़कियां वेयर वी ताड़ने. फाउंड, हम लोग ने मोहित का लुक अलाइक ढूंढा. यस. और He did not इज अ look like me, बिगर guys. फैक्ट मैन. ही He डिड is guys, गाइस. he much was better looking looking. no, 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 you are much better looking, but he was looking more like you. But He सैटरडे does मैं not क्या look like किया me यार. गाइस. कोई स्क्रीन शेयर करके दिखाओ. He does not look like me. Saturday, oh हाँ, I went to an Italian restaurant, and
मेरा नसीब इतना फूटा था कि वहाँ पर ड्रिंक्स ही नहीं है, और वो हमने ऑर्डर देने के बाद हमको पता चला कि ड्रिंक्स नहीं है। ड्रिंक्स नहीं है। सबसे पहले ड्रिंक्स एंड मेन्यू देखते हैं यार। और या प्रॉब्लम क्या है कि मैं ना कुछ कुछ कर रहा था फोन में, विच आई वाज लाइक वेरी कॉन्फिडेंट कि ये हो जाएगा एंड देन वी कैन स्टार्ट, एंड देन there or actually they kept the drinks menu in front of me, but apparently those were some mocktails. And I was like, why the fuck it is like that? But yeah, sad thing happened, and I don't want to be rude. मैं तेरे को बोलूँ कि फट यार, एक एक बात बोलना, फक इट इज सो एक्सपेंसिव यार। What बैंगलोर में is? लिकर इज सो फकिंग एक्सपेंसिव। Is it? It's crazy. It's crazy एक टाइम expensive. मैं पे जा मतलब रहा हूँ अभी। नॉर्मल November first week में I'm मैंगलोर going to नहीं है। Bangalore. I thought you're going Dude, to Mangalore. Bangalore. B की M. Like for a, I mean I'm going for a wedding, so I'm going on Yeah, I 6th. thought you're going to Mangalore. Bangalore भाई, और कहाँ? बेंगलुरु। अच्छा बस Okay. 6th को मैं जा रहा हूँ सीधा ऑफिस के बाद। तो आई शादी है तो आई देखो तो मीन फ्री का दारू मिलेगा यार, तो कोई टेंशन नहीं है। मतलब क्या रो क्या सैटरडे रहा है? संडे मैं तो दारू पीता भी नहीं हूँ वैसे, टू बी ऑनेस्ट, बट हाँ मैं तब भी नहीं पीऊंगा। पीता, लेकिन यार जब मेरा मेरा लाइफ का एम ये है कि लाइक मेरे को इवन इफ आई एम 88 आई शुड ड्रिंक, क्योंकि माई ऑल द इवेंट्स हैप आई वांट ऑल द इवेंट्स टू हैपन अराउंड देयर। मेरे पोते ग्रैंड पोते सब मेरे सामने पीना चाहिए, पी तू क्या बात देखिए। है। क्या बात I है। have, because I have been raised like that, so I want that continuation to happen. We've So been raised the same way, so I think we will also be like a PO yeah, I PO. mean I don't like drinking for health reasons also, like alcohol doesn't really suit no, me. but limit में रहो. The point is that No, peeing no, no, no. limit. हाँ It's not about that. मेरा तो अलग ही reason है. But yeah, I mean, I drink during weddings only. So weddings में पीऊंगा थोड़ा. Like I won't. Like last time I drank. I think I drank after 3 months. So I got sloshed. Like really, really sloshed. I puked and all also. But yeah, I know Uttu's not going to be with me this time in Bangalore. I'm going alone. So I don't want to. Oh, ये कैसा So I wedding है don't बे? want. अच्छा, I know. Okay, okay, okay. Yeah, okay, yeah. Because of Uttu, I mean, whatever she's going through, she was like, मैंने बोला रैन, I mean, she also did not want to take a risk, obviously. So मैंने बोला तू रुक, मैं जाके आया, और मैं जा रहा हूँ। मतलब मेरी अभी भी इच्छा है कि मैं कैंसिल ही कर दूं, but I fucking checked, I did not have non-refundable tickets. 7,000 का घाटा है सीधा। So I was like, fuck it, I'll go. And 6th ko my friends are reaching in the afternoon. I'm finishing my office that day and reaching there in the night. And 7th 8th is the wedding. 8th रात 9th सुबह मैं निकल जाऊंगा वहां से, ऐसा सीन। Where is the wedding? Saturday morning. Which area? Any idea? I think it's near the airport only, which is like amazing. Like it's 30 minutes from the airport. होटल पे ही 30 है, minutes मैरियट है आई from the थिंक। airport is near. Okay. Oh, I think it's. Oh, हाँ okay. I समझ गया किधर है. हाँ Okay. हाँ। Nice. तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। Hmm. But in a Did way, you guys see what to say? the India versus Bangladesh match? Nope. मैंने नहीं देखा। नहीं देखा तुमने? मैंने खाली तो फुल बैटिंग देखी 90 सब तेरे साथ। क्या बैट क्या यार, मतलब क्या धोया है यार, मजा आ गया यार। 300 हट, बकवास टीम है इंडिया, 300 से रह गए। Guys, like and subscribe for this chill boring stream. For this chill stream, guys. Slow stream. Yeah. But बाय द वे, मैं डेड स्पेस आई है और मेरी फट रही Fuck है खेलने में। you. Fuck you. राहुल, हैव यू हर्ड ऑफ दिस गेम कॉल्ड डेड स्पेस? no. क्या है इस I गेम में? डेड स्पेस इज अ hate सर्वाइव I hate words so much. Seriously यार, मतलब डेड क्या यार। स्पेस is a survival horror game based in हाँ। space, obviously, because it has dead space, and it is a Oh, तेरे really पीछे, really what the scary game. hell? We just saw someone. Oh my god. It's so scary. One second, I'll just No, Before it's okay. before entering. Oh say my hi god. to Tu. Yeah. Hi. Hi. I think Anyway, she's on. Yeah. Hi. कर ले भाई, चेंज कर ले।
No, it's But okay, and I think. And yeah, so Dead Space I and it's free, so I don't know. We are like oh so. हाँ, I saw this. God, मैं तो भूल ही गया था. I saw this icy Netflix में icy something एक सीरीज है ना, इंडियन एयरलाइंस वाला, विजय वर्मा वाला. By the way, I Ah, love I Vijay saw that. Verma. I saw that. It Yeah, was good. It was good. I love Vijay Verma, and like he's my, and I just love him. He's just so cool. He's so cool. तेरी तो पता बॉडी है दिख रही है मेरा उसके पीछे से, लिटरली ऐसा लग रहा सब्सक्राइबर्स है इतने कम हो कि जाएंगे ना बॉडी ये बोल रही है. रिकॉर्डिंग के बाद कि तुम Hmm? अपने सब्सक्राइबर्स इतने कम हो जाएंगे ना ये रिकॉर्डिंग के बाद. देखिए लोग क्या रैंडमली बातें कर रहे अरे बट इसमें क्या है यार. गाइस, अगर तुमको हैं. नहीं पसंद आया, डिसलाइक द वीडियो. आई रियली मीन इट. डिसलाइक द We वीडियो. अनसब्सक्राइब want कर. feedback. Don't even leave the comment. Just dislike it and give us Yeah, a last chance because we are trying. If you are enjoying, enjoy. If you're not enjoying, give us a please like. dislike the video. If you're Yeah. not enjoying, dislike the video. If you're liking the video, like the video. Basically, yeah. Then we're coming out with proper football content. Yeah. Tonight we don't have. We'll tell. Our friends We are will not also available. tell you why this is happening. There is no. I Yeah, don't feel ashamed of telling you. We were supposed to do the preview today, but Mayur, the Chelsea fan, is unavailable. He not will be available. available He's pretty being a late, so we won't be able pussy. to. And also Rajveer boy, your favorite Rajveer, who is an Sweet Arteta boy, fan, so he is also not there. not So available. there's Yeah. no point in doing this. Yeah, you don't want So to we hear just thought me of this. ranting about Arteta, so that's why we need him. बट देर बहुत सारी चीज़ें अराउंड फुटबॉल मेरे को थोड़ा डिस्कस करना है, नॉट द रिव्यू. वो करना है अभी. लाइक दिस वन थिंग आई वांट टू डिस्कस अबाउट आर्टेटा. आर यू ओके टू डिस्कस दैट, वरुण? Yeah, I'm fine. कि आई मीन यू कैन से नो आल्सो, बट यार व्हेन इज द लिमिट? आई नहीं कर सीरियसली नहीं करना अंडरस्टैंड व्हेन मेरे इज को द डिस्कस लिमिट. ही नहीं. मेरे को डिस्कस ही नहीं करना. The limit is mere for me. I've told been being this is the season. This is the limit for him. He's done the GA कर लिया है उसने उसने points tally इकट्ठे कर लिए. He's done everything that he must have. Up and it's proven in the last two seasons also that he doesn't need basically if Arsenal gets his act together then City is not basically क्या बोलते हैं उसको a factor in us winning the league. Considering that if we would not have dropped points against Fulham when we were 2-1 up against a 10-man Fulham, तो 2 points उधर मिल जाते हमको और हम लोग लीग जीत जाते. विला से घर पे नहीं हारते तो हम लीग जीत जाते. ठीक है, so we had like ample of chances and things going on last season where it proved that Pep is not invincible. It's just that we keep fucking up ourselves. So now Arteta has to fix all these holes and gaps that I can see and probably he can see as well. And I am pretty sure he also knows कि यार I don't need to fear City. What they're doing. Arsenal just needs to do their job and we'll win the league. So and it's like it's been 4 matches now. City has not been able to beat us. तो Pep तो directly हम लोग को हरा के लीग नहीं जीत सकता, which he did last season. अब वो नहीं No, होने there वाला है. is So I one comment which I read in the group which literally made me feel कि यार इससे ज़्यादा कोई गिर नहीं सकता. इट्स लाइक कि ये सीजन अगर हम नहीं जीते और अगले सीजन अगर पेप गॉर्डियोला छोड़ के जाता है तो शायद exactly. हमारे पास चांस है जीतने का. आई मीन लाइक पेप गॉर्डियोला जाने के बाद भी अगर That's तुम बोल just रहे हो that's चांस just है a तो. that's just a loser mentality, very honestly speaking. तो वो वही like it's just that कि they keep uh, barking up this tree that God given right नहीं है God given. तो सिटी के पास क्या God given right है कि वो लोग हमेशा favorites होते हैं हर सीजन? मेंटालिटी मैटर्स ना. Exactly, Half the the time, mentality half the is time, the other, I think half the time, other football fans makes it easier for City girls. City तो है तो मतलब जीत ही जाएगी. Like they are only building the mentality for them. हाँ मतलब Sometimes I plus feel even like that. if you even look at their fans now now their fans believe कि they will win. So I this is something that जो मोहित में अभी भी inherently is because he's seen his team win 10 titles. So मोहित के उसमें there is an inbuilt है कि भाई मेरी टीम तो जीतेगी ही.
while Hmm. Arsenal, because we have not won for 20 years now, 21st चल रहा है, तो दिमाग में हमारे भी है कि डर है कि हम, because we bottled it couple of times as well, so we are afraid कि we can we cross the line. But honestly speaking, वो mentality है, why, like, we can win this season. Nothing to do with Pep. Pep ho ya na ho, we have to win. Like, it is something, and I would want to win without the 115 charges. If City drops points, उनको Yeah. they get that deduction or I want to beat City at their best with Pep at the helm. जो उसका जो वो मिलेगा ना, मतलब दिल को सुकून, वो किसी चीज से नहीं मिलता। नहीं, मैं जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि पॉइंट डिडक्शन होता है एंड रेट्रोस्पेक्टिवली दे गो बैक एंड दे डिसाइड कि भाई हम लोग को टाइटल्स भी स्ट्रिप कर देने हैं, तो जैसे ओलंपिक्स में होता है, दे गिव द इफ द गोल्ड पर्सन हु विंस द गोल्ड ही इज डिस्क्वालिफाइड आफ्टर द टूर्नामेंट, द गोल्ड इज देन पास डाउन टू द गाय हु केम इन सेकंड, या जिसको सिल्वर दे देते हैं, ही इज अवॉर्डेड द सिल्वर, sorry, he's awarded the gold medal. So if they end up, let's say बोले कि हम लोग लास्ट 5 सीजन के उनके स्ट्रिप कर देंगे, पॉइंट्स डिडक्ट करेंगे थोड़े थोड़े करके, तो लिवरपूल गेट्स 2 टाइटल्स, आर्सेनल गेट्स 2 टाइटल्स, ऐसा कुछ होता है, तो मैं फिर दिमाग में, ओके, सो वी एडेड 2 टाइटल्स, आ गए हमारे ट्रॉफी कैबिनेट के अंदर, ओके, बट आई डिड नॉट गेट टू एंजॉय देम। जो Exactly. मेरे को, You didn't जो witness it 2000, basically. एग्जैक्ट, आई डिड नॉट विटनेस इट, एंड सेकेंडली, एज फैंस, ठीक है, ना मेरे को पैसे मिल रहे when the team wins, I'm not getting the prize money, I am not getting the trophy जो मेरे घर पे रखी जाएगी, या मेरे को वो मेसी की तरह वो बेड पे सोने वाले पिक्चर में खींच सकूं उसके साथ, ठीक है, तो मेरे को तो Yeah. कुछ मिल नहीं रहा। ओनली थिंग दैट आई एम गेटिंग इज ब्रैगिंग राइट्स एंड आई एम गोना बी हैप्पी कि माय टीम इज विनिंग, ठीक है, दैट अंदर से वो इन, लाइक, दैट इमोशन विल कम। जब ब्रैगिंग राइट्स आने थे, those those 2 years तो have been hell for me from rival fans and other fans who've been calling us bottlers, तेरी टीम रद्दी है, all those banter that I've taken. I can't go now and say अब मैं 2 साल का banter तुम लोग को दूंगा, ये वो blah blah nonsense. And technically मैसेज ढूंढ City, रहे व्हाट्सएप। हाँ, मतलब वही, मतलब it's just ridiculous के if they strip the titles and give it to the teams that came second, I don't think I'll be very happy if we do get those titles. I want to beat City at their best. वो जो जीतेंगे ना भाई, सिटी को बीट करना है। राहुल, तेरे को तो वो एक्सपीरियंस है ही, बट अनफॉर्चुनेटली कोविड सीजन था, तो यू गाइस वर स्ट्रिप्ड ऑफ दैट लिटिल एक्स्ट्रा जो होना चाहिए था ना, बिकॉज ऑफ द एम्प्टी स्टेडियम्स एंड ऑल। आई थिंक यू गाइस हैव, तुम लोग का We जो didn't got एक, to celebrate now. We didn't एग्जैक्टली, celebrate. एग्जैक्टली, इट वाज लाइक, Henderson was lifting the trophy and yelling in front of an empty stadium. एग्जैक्टली, I mean, एग्जैक्टली, सो like, दैट, it clearly shows it's for a photo. हाँ, मतलब 30 years बाद लिवरपूल जीत रही है टाइटल, एंड देन Exactly. यू आर लाइक के साला क्या है ये, मतलब द स्टेडियम वाज एम्प्टी। सो आई I can just imagine ke beating that this city where they won 4 in a row. They are still the 70% favorites hai, with the new जो stats आए थे recently. And now we are, if we end up beating the odds, finally crossing the line, it will give me such a big, like, it will be such a joyful moment for me, and like for the next 3 4 months. And I know that if we win this title, beating City, I have this feeling we can go a step further and probably even go for a Champions League जो मैं कभी भी confident नहीं हूँ, like since 2006 तो मैं confident ही नहीं of what has happened. But doing this will, I think, actually give me the confidence कि हाँ, finally Arsenal can go for a European title now under this manager I with think this. beating Pep Guardiola when he is in the league is more important. I Exactly. don't, because obviously that boosts the morale, the confidence, and everything. Like you just name it, whatever the adjectives you want to put, you can put it around, and it will Yep, just yep, yep. skyrocket it. I think keeping that mentality when Pep is not around and winning, it's like Pep has accepted the defeat that there is no challenge for me Yep. in this हाँ, league. वही. And you guys, why don't you guys have all the fun? It's like hero pleasure का tagline मार के तुम चले जाओ यहाँ से, which is not what. That is one thing which I like about Klopp is like he has achieved everything when
everything was at its peak, and he got to retire or he got to stop whenever it was needed to prove Arteta that he is one of the best. I think this is the Yeah. time where he should be doing it. And the Coming uska like second again is not gonna make any sense. and bro, just imagine, for Arteta basically, he is being lauded as one of the most tactical, like sort of उसको बोलते हैं. He's because he's not won the trophy. वो सब होता है ना कि you can see a player like why Saliba, why I keep saying I don't find them as world class, and I think even Saliba said it in an interview. I want to become the best defender in the world, but I will not become the best because I have not won anything. Unless I win something, I cannot claim that I'm the best. So that thing, once he wins a trophy, na, I think finally he can. People जो बोलते हैं कि that he's sort of a genius, he tactical अच्छा है, like उसका he changes as per the situation. He has a plan A, plan B, plan C, plan D. 10 men down जाना मेरे को ये करना है. वो अब 8 certain opponents का मैं ऐसे खेलना है. मतलब he changes his tactics. He's very versatile. But if it does not lead to anything, then he'll be looked at as a मतलब क्या है यार ये क्या किया इसने नो इट्स लाइक कि I it is know, for nothing मतलब it is for I nothing. know. You have So to what back if all these Arsenal things with a doesn't win trophy. anything? Do you think Saliba will stay or will he go to Real Madrid? नहीं he'll leave पता है क्या है रियल मैड्रिड इज एट द डोर नो एंड रियल मैड्रिड का जब कॉल आता है ना it's like no one can say no मतलब it's No so one can say tempting no. that move. Yeah, That move is so tempting because you know you're gonna win trophies. Not only trophies, you're gonna probably be the one of the favorites to win the Champions League, which is the holy grail in Europe you're when gonna you're play playing with in the Europe. best. That's Exactly, and also. you get to play with the best. And honestly speaking, Spain is like a nice country to stay in as well. Madrid is an amazing Exactly. city. Yeah, yeah, It's yeah, an amazing country to stay in. It's better weather than England. Because so yeah. the players don't mind moving to Spain. There is some sort of racism in that country, but overall, matlab, like it's fine. Like overall, people enjoy. Like we've seen what happened with Vinicius and other players. What happens when they go to some hostile stadiums? उनका क्या होता है? We've seen. But I think the players become more mentally strong because they're winning. They're happy, so they are fine with all those things that are happening. It's not like I have never heard a player go like, "अरे यार, because of all this, I want to leave." ऐसा कभी I've never heard. So it's all you go through. So Saliba might leave. I feel for even Saka because Saka has been. I showed the stats the other day that this kid has been improving his GA year after year after year. And look at this season. He is already at 7 assists in 7 games and 2 goals. He's at 9 GA already in the Premier League. So this kid is also like performing year in year out for Arsenal. He's our main guy. And imagine Arsenal not winning anything. This he's gonna think यार कब तक मैं ऐसे ही चलता रहेगा कि मैं कुछ नहीं जीतूं. And good players eventually think well, like they are not idiotic. They understand कि भैया आ गया है मेरा time. मेरा career is short. Let me win something. Let me move on. सब लोग स्टीवन जेरार्ड की तरफ स्टीवन जेरार्ड also won the Champions League. अगर तुम लोग बीच में ट्रॉफी जीतते हैं वो I'm sure even Steven Gerrard would have thought कि यार अब यहाँ से चलता हूँ मैं. बहुत साल दे दिए मैंने Yeah, लिवरपूल. Steven Gerrard almost left. He almost Yeah, left for Chelsea, yeah, and I think nowadays, as a footballer, you get all the fame, you get all the money, you get all the plus benefits, whatever you want, but the honor awards तुम बोलो या trophies तुम बोलो, that is something which you cannot get so easily. You have to earn it. So to earn that, you need to be in a club which is associated with winning, which I feel the same. जो साका के बारे में तूने बोला, I completely feel the same for Arnold. यार भले तो सब जीत गया, बट अभी क्या है? अभी तो आई एम स्टिल यंग, आई एम स्टिल at my peak. Why not? He might also go to Madrid. Van Dijk has won everything. ठीक है, वो नहीं करेगा. I'm pretty sure he can go to any major clubs other than England. Also, he can go anywhere and he can get it. So I understand that, but it's
I do feel that it's now or never for Arsenal. Um, Next season, okay, maybe we can. I don't know. मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि he might go to City यार. I don't know. I just have a feeling. He's a They're good. moving to City. I don't know. I just feel that it's a something which can I he the squad is good, the team is good. Why not? But you never know. City, yeah. I think if Arteta leaves, if he moves to City, with cities, जो City के problems आ रहे हैं ना, Arteta will be going from one frying pan to another. Yeah. मतलब वो it won't make sense for him to move. It would be better for him to go to Barcelona Hmm. or probably somewhere like a PSG जहाँ पे he can probably work more freely and pressure होगा definitely Barcelona में बहुत pressure होगा but probably he'll do much better at those teams. City जाएगा ना City में problems आ रही with these charges and all and every year this and City में एक अच्छा है the fans won't put pressure on him. There is Hmm. no such pressure on winning in City. What do you think, Mohit? आर्टेटा का तेरे को क्या लगता है? मेरे को पता है ये एक एक्चुअली डिस्कशन करना ही था कि लाइक बिकॉज ये सब पता है ये सब ऐसे टॉपिक्स है गाइस डोंट गेट मी रॉन्ग बट ये सब ऐसे टॉपिक्स है विच वी कैन नॉट डू इट इन योर डेली प्रीव्यू या तो रिव्यू वाले सेक्शंस में बट डू यू Arteta, थिंक I feel, Arteta is in a place to win something with the kind of team he yeah, has or I don't know if he's the manager. I know he will be gone if he doesn't win anything if Pep is not in the league. do you और think मैं he'll तो join बोल रहा हूँ City? कि he has to leave even if Pep is in that league मतलब because I gave you a long list where Pep is not a factor in Arsenal winning or losing anymore. Pep is not a factor for I Arsenal. think whatever you said is That is for delusion. sure. क्या delusion क्या है Pep मोहित is a देखो big लास्ट factor. कैसे तू मेरे को बता ना लास्ट सीजन we dropped 2 points at home against Fulham यार we were 2-1 up against a 10 man Fulham City rattled you. क्या सिटी इट वाज और ऊपर से ये पता है अगस्त में मैच था एक साल पहले लिटरली स्टार्टिंग सीजन में हमने ये हरकत करी City rattled you by winning 15 in a row. आह, That's City for you. Can't do Yep. anything. लिवरपूल के साथ हो रहा है 3 साल से तुम लोग का नए हो गया. नहीं नहीं आई यार डोंट हम थिंक सिटी इज अ फैक्टर लिवरपूल का तो 8 10 यार से दूर है जॉब लिवरपूल का तो आई एम जब तक हम जीतेंगे नहीं ना तब तक वी डोंट बिलीव वी हैव अंडरस्टूड दैट इन अ वेरी दिसंबर में वी वन द लीग 2020 में मैं बट राहुल मैं तेरे को ना प्रीव्यू में पूछूंगा अब तूने अगर नाटक किया ना बे मैंने बोला ना आई एम बीन वेरी ओपन आई कैन गो ऑन रिकॉर्ड आल्सो इफ वी बीट चेल्सी एंड इफ वी बीट आर्सेनल आई विल से वी आर फेवरेट्स यही तो टेस्ट है It's वरुण not about तू it's not खुद about बोलना है favorite. और क्या It's not टेस्ट है about यार it's वेयर not वाज about I'm लिवरपूल saying टेस्टेड forget about being favorite. The way you go into every single match, ठीक है? Bottom half teams के सामने भी you are looking at every single match as a banana scale like it's gonna be a banana skin match कि हम लोग slip कर जाएंगे हम लोग slip कर जाएंगे हम हाँ ये तो तू करेंगे देखा नहीं क्या every लास्ट दो single मैच तो मैं तेरे को पर एक तू मैच नहीं लास्ट दो दिखा मैच वरुण तू अरे लास्ट पर दो एक मैच एक देखा मैच नहीं में यू क्या नॉट बीन कॉन्फिडेंट मैन मतलब एक मैच में आई तू वॉज आके मेरे को बोला है कॉन्फिडेंट कि इन हम लोग नॉटिंगम जीतेंगे फॉरेस्ट आई वॉज कॉन्फिडेंट इन नॉटिंगम फॉरेस्ट और नॉटिंगम फॉरेस्ट का कॉन्फिडेंस कहाँ से आया था तू खुद बोल नॉटिंगम फॉरेस्ट का कॉन्फिडेंस इस इप्सविच टाउन का देख के मैंने बोला कि लाइक बॉस ये तो आएगा आराम से इन लास्ट टू मैच आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू वी हैव बीन सो स्लॉपी भाई वुल्स वहां चांस क्रिएट नहीं कर रहा है एंड वी आर नॉट एबल टू विन वुल्स चांस ही क्रिएट नहीं कर रहा है तुम क्या एक्सपेक्ट करते हैं इमेजिन वी प्लेइंग द सेम अगेंस्ट चेल्सी एंड आर्सेनल भी खत्म कर देंगे ये लोग लिटरली खत्म कर देंगे लेस्टर के सामने तुम लोग जब 2-2 हुए क्या मैच खेला आर्सेनल द होल गेम प्ले चेंज्ड But Toby,
लास्ट 5 मिनट में ही गोल मारे इन लोगों ने, फटी तो इनकी भी हुई थी। भले पर कितना अटैक कर रहे थे, मैं बोल रहा हूँ वैसा अटैक तो भाई हम वो लोग कर ही नहीं रहे। that Leicester keeper he kept them in the game for the longest period of time. अगर वो He उसने was उसने on some kind of a fucking no, steroids man, bro, he made, पागल की तरह अरे, सेव कर रहा he था did, वो। I think he made uh, equaled the tally of saves that De Gea did against Arsenal, I think many years ago. कुछ उसने बंदे ने कुछ ऑलमोस्ट 14-15 सेव्स किए थे, which is equal to what De Gea did against Arsenal एक मैच में. So he was on good राजवीर form, and he was राजवीर playing. इज ऑन ड्रग्स ना, बाय द वे, ही इज सेइंग वी आर इन फॉर इसाक, लेट्स गो। जैसे न्यूकासल बेचेगी तुम लोग को इसाक। अबे अभी से क्यों इतना रो रहा है यार ये? आई मीन चरस फूक के बैठा रहता है ये आदमी। Sorry Raj, it's recording and it's gonna be, if you hear this, but bro come on यार, अभी यार जनवरी, अभी भी 2 महीने दूर Stop है, drugs, और हमेशा stop doing तूने मेरे this, को तूने तूने मेरे स्टॉप को डूइंग बोला look था, after yourself, किड्स look किड्स after किड्स तूने मेरे को yourself, तूने मेरे को बोला था कि get help। हम लोग एक बहुत बड़ा प्लेयर साइन कर रहे हैं। या आई माइकल डोंट जॉर्डन का अंडरस्टैंड मीम आएगा, प्लीज गेट व्हाई सम आर यू हेल्प। वरुण बीइंग सो पैनिकी। आई एम, जितना तू पैनिक कर रहा है ना उतना ही मैं चिल हूँ, ठीक है। और इसका मैं आई एम डेडलाइन देखा, तेरे को इक्वली चैट देखा, रिलैक्स्ड। आई एम इक्वली रिलैक्स। और इसका अगर तेरे को डेडलाइन डे का मैं तेरे को चैट शेयर करूंगा ना पर्सनल ग्रुप में, ही इज लाइक पैनिकिंग आल्सो, व्हाट द फक वी नॉट साइनिंग इट, मतलब व्हाट द बोला था मैं मुझे साइन पता है। है, मुझे वो भी फनी नहीं लगा। मेरे को फनी मुझे तो लगता है लगा राज एडू, पता है क्या करते हैं, एडू एंड राज इज एडू एंड लाइक, आर्टेटा राज इज कमिंग लाइक आउट एंड सेइंग दैट कि हमें सब मिलके हमें जो करना है एंड वी आर परफेक्ट, वी आर द स्क्वाड इज रेडी टू टेक ऑन द चैलेंजेस। आई मीन लाइक व्हाट, तुमने एक्सेप्ट भी कर लिया। राज का भी नया बहाना पता है क्या है? आई डोंट, वो ऐसी आवाज में बोलता है, आई डोंट वांट टू साइन प्लेयर्स इफ दे डू नॉट फिट, इट हैज और टू उसका बी द माइक राइट खराब था साइनिंग। उसका, उस दिन उसका माइक खराब था। उसका माइक खराब था मैं। और एंड ये मुझे राज तो है ही, राज लिटरली वी apologize if you feel bad, but we डोंट don't आई फनी give a ब्रो, डोंट, मस्ती shit। कर रहा हूँ, आई जस्ट डोंट, बैंटरिंग। मोहित के साथ ऑलरेडी एक हो गया एंड आई हैव स्टॉप गिविंग शिट टू पीपल, बट माय पॉइंट इज कि why this Arsenal fans are making us the favorites is what I'm not getting। ब्रो एंड ब्रो स्पेशली राज, ब्रो तुम्हारे ब्रो पास वर्ल्ड क्लास नहीं नहीं प्लेयर नहीं, है, वर्ल्ड आई क्लास आई प्लेयर है। नहीं, एक मैंने बात स्टार्ट किया, बताओ, इंग्लैंड ये मैंने मेरे को बोल, इंग्लैंड स्टार्ट में किया। वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स है, इंग्लैंड घंटा कुछ जीतता है। तुम्हारा मैनेजर घटिया तब तुम बोलते हो, हमारा मैनेजर को टेस्ट तो करो यार, अभी हमारे कर रहे हैं मैनेजर ना, को चिंता उतरने मत तो कर। दो। एग्जैक्टली मैं तो बोल रहा हूँ, चेल्सी अगर हमने चेल्सी को तू हराया भी और कुछ अगर ज्यादा ही हमने फट्टू है आर्सेनल को राहुल हराया, भट्ट, तू भी पर कुछ तू ज्यादा ही देखता नहीं है फट्टू ना। है। नहीं, बात फाटू की नहीं मैं, है, तू देखता नहीं है मैच। मैं अभी तेरे को ओपनली बोलता हूँ, जैसे तू मेरे को बोलता है ना, तू भाई मैच मैंने देख। तेरा ब्रेंटफोर्ड वाला मैच देखा, उसमें तुम लोग अच्छा खेले। ब्रैंडफर्ड वाला फिर सेकेंड भी हाफ में ओके तुम, था, मैंने स्टार्टिंग ब्रैंडफर्ड के वाला तुम्हारे फिर दोनों भी मैचेस ओके के, था। अपन ने बेस्ट जब वाज यूनाइटेड और बॉर्नमथ एंड इप्सविच यूनाइट, टाउन, दैट वाज सुन द मेरी बात, बेस्ट, दिस इज एन आउटसाइड पर्सपेक्टिव एंड फॉर एसी लिवरपूल। मिलान। आई सॉ द फर्स्ट 2 मैचेस ऑफ लिवरपूल दिस सीजन, और अपने दोनों की जब रिव्यू की बात हो रही थी, मैंने तुमको बोला कि तुम फर्स्ट हाफ कुछ नहीं करते, सेकंड हाफ फाड़ देते हो, एग्जैक्टली, ये अपनी बात हुई थी, बराबर है। एग्जैक्टली, और तब तेरी तब एग्जैक्टली। फटी हुई थी। आई एम नॉट श्योर इफ विल बी एबल टू डू दैट एवरी गेम। मैं ठीक है, उसका भी तेरे को रीजनिंग बोलता हूँ, मैं छोड़, कुछ अपने आप को है बट ना वो तुम लोग नहीं कर अच्छा ही रहा हूँ। खेल रहे हो, मैं बहुत फटी। तो लास्ट यहाँ दो देखना मैच क्या हम अच्छा हालत है, नहीं खेले। यहाँ देखना। क्रिस्टल पैलेस वी डिडंट प्लेड वेल, वी वर लकी, वी वर लिटरली लकी, 1-1 होते होते बच गए। एजी राहुल भाई, भगवान है शट हमारे योर लिए जो माउथ, मिस कर दिया। शट योर माउथ। मैं 2 गेम जीता हूँ पूरा वरुण, सीजन, शट द फक अप। अरे बट तुम द लोग छह पॉइंट इज गेम कि जीते हो। टेस्ट, दिस इज वेयर द टेस्ट विल हैपन ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ। एंड इफ वी बीट चेल्सी एंड आर्सेनल देन मैं सीना चौड़ा करके घूमूंगा। भाई हम लोग बॉटम हाफ वाली टीम्स को हरा के बैठ के, हम लोग यहाँ पे सीना चौड़ा करके बैठे। क्या फट्टू यूनाइटेड है से रे। बेटर मैं पोजीशन में है, मैं तो यूनाइटेड से बेटर स्टार्टिंग में पोजीशन में, मैं हम लोग खुद बोल रहा हूँ। आर्सेनल को हराएंगे, हमारी इतनी गंदी हालत है, हमको पता नहीं हम ब्रेंटफोर्ड को हराएंगे, बट आर्सेनल के सामने मैच होगा, मैं बोलूंगा इनकी तो मार के रख देंगे। चूतिया मैं प्लेयर, भी चाहता हूँ, हमको चूतिया मेरे को प्लेयर, चूतिया मैनेजर। चूतिया मैनेजर के कारण नहीं, मेरे को लिटरली देखना है कि हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं। जब हम लोग चैंपियंस लीग का ड्रॉ कर रहे थे, मैं बोल ही रहा था मैड्रिड चाहिए, मैड्रिड चाहिए, मैड्रिड चाहिए, मैड्रिड आ गई। क्योंकि मेरे को पता है ये लीग वाले में तुम हारो जीतो ड्रॉ करो, इट डजंट मेक अ मैटर, तुम क्वालिफाई हो जाओगे, पर एटलीस्ट तुम स्टैंड आउट तो करोगे कहाँ है।
पर राहुल हमारा देख नसीब देखो कितना मेरा फूटा है, उसके बाद मेरा सिटी का देख मैच है, मैड्रिड के बाद मेरा सिटी का देख मैच है सुन, हमारा। I started with the whole Liverpool's favorite thing. It was not Rajveer. I started it, ठीक है, and I No, but stick by it. Rajveer is playing it. You started it, but he's playing now. नहीं, but Thanks, thank you. like But hopeful. I'll give you my reasoning why I believe you guys are the favorites. ठीक है, we have been talking about why Arteta needs to be sacked. ठीक है, and why ETH needs to be sacked, and it keeps on this guy keeps on bringing up this point where if you see teams like Real Madrid, PSG, Bayern Munich, they have got good world class players where like they change the managers and the new manager comes in with those set of players, he wins. You guys have ये changed मेरा it. पॉइंट था, ट्रूपर का पॉइंट नहीं था ये मैं बोल रहा हूँ, मैं ये बकवास कर रहा अरे हूँ दो यार, वीक से। ट्रूपर तेरे से पहले बोल रहा है यार, तू रहने देना, जब तक तू ईटीएच आउट नहीं हुआ था उससे पहले से ट्रूपर बोल रहा है तो I know, but या लिवरपूल नहीं वो नहीं, लिसन कंडीशन लिसन में लिसन नहीं है। लिसन 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 मेरे भाई, लिसन. नहीं नहीं You सुनना guys मुझे। have you guys have four world class players, ठीक है, साला, Trent, Alisson and Virgil van Dijk, and you have a good set of surrounding players like McAllister. Shobozalai को मैं अभी नहीं बोलूंगा because he is very up and down. He's Then you ready have a off now. player like you Luis have a player like, Diaz, yeah, you have like a Konate, you have Robertson, then Luis Diaz, he's also a decent player. Jota. Yeah, you bat and you have Jota. Hmm. So you have these set of players that can add who and these are not players that have not won. They have won I trophies. Who have, agree. yeah, ठीक है? I'm with you So on this. they have the mentality of winning as well. You Yeah, brought yeah. in this they brought in you brought in this new manager who has got new ideas than Klopp. Probably Klopp थोड़ा सा burnout हो गया था with his entire career at the end of पर last मैं 2-3 वही साल. बोल रहा हूँ, ये जो तू पॉइंट बोल रहा है ना, that needs to be tested is what I'm saying. हाँ नहीं, I agree. But if you see Arsenal के जितने भी players हैं, ठीक है, Havertz, Jorginho, जेजूस है, जिनचेंको, ये चार प्लेयर्स को छोड़ के बाकी जितने भी प्लेयर्स, और ये चार प्लेयर्स भी वर्ल्ड क्लास नहीं है, ठीक है. जॉर्जिनियो एक टाइम पे वर्ल्ड क्लास था, व्हेन ही केम टू आर्सेनल ही वाज नो लॉन्गर अ बाकी वर्ल्ड सब क्लास. वर्ल्ड क्लास नहीं, है तुम्हारे। कौन से? जॉर्जिनियो वर्ल्ड क्लास था कभी भी नहीं था लाइफ में उसके, ब्रो जॉर्जिनियो वर्ल्ड क्लास। ही केम इन नहीं, सेकंड भाई साहब. Jorginho won the Euros, he won the Champions League, and I think he won something else also. तो नहीं, वो influential player था चेल्सी में, बट वो वर्ल्ड तो था क्लास ही। नहीं है बे जॉर्जिनियो, मतलब But ठीक है, मतलब ही वाज पार्ट ऑफ वेरी गुड टीम्स, मैं ये he बोलूंगा। was quite influential, but आर्सेनल का स्क्वाड मेरे को मतलब अच्छा, राया ठीक है, he is good, he is not world class. सलीबा इज वर्ल्ड क्लास, गैब्रियल इज बस उसके इक्विवेलेंट वर्ल्ड सिवाय और क्लास, कोई वर्ल्ड क्लास नहीं है। राइस है, साका है। आई मीन राइस और तुम, साका बस। यार राइस को तो पहले तो मुझे बता दो क्या है। मुझे कोई कोई बोलता है 120 मिलियन दे के वर्थ इट है, और कोई बोलता है कि वो वर्ल्ड क्लास नहीं है। आई कैनॉट टेक बोथ। आई पर्सनली फील ही इज वर्ल्ड क्लास, ही इज अ नंबर 6 परफेक्ट डीएम। इवन आई एम रेडी टू टेक इन माय टीम जो हमारे पास डीएम ही नहीं है। बढ़िया, सो फॉर मी जो राइस इज प्लेयर वर्ल्ड अच्छे ले लो क्लास। तुम। जुबे मंडी ले नहीं सकते भैंचो, तुम राइस लोगे। तो सुबह मंडी आना नहीं चाहता है ना। सुबह मंडी की वाइफ बोलती है कि पगार हम क्या पगार ऑफर करेंगे नहीं यार किया तुमने उधर, उसको, पगार नहीं हम दिया। लोग क्या करेंगे वहां पे जाके, नहीं, हम देखो क्या देखो बैठ के फिश एंड चिप्स खाते रहेंगे क्या। देखो, आर्सेनल में देयर आर नो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स, अभी भी नहीं है, कोई शट भी नहीं अप यार, क्या बोल रहा है यार, सलीबा वर्ल्ड क्लास नहीं है। है. नहीं आर्सेनल के फैंस वर्ल्ड क्लास है। सलीबा वर्ल्ड क्लास आर्सेनल नहीं के है नहीं, नहीं, आर्सेनल के पागल भाई। क्या नहीं, है? सॉरी, हाउ इज आर्सेनल के प्लेयर्स। अब भी हाउ इज रियल सलीबा मैड्रिड वर्ल्ड निकल। क्लास? हाउ इज व्हाई आर्सेनल इज के सलीबा ही वर्ल्ड नॉट क्लास? वर्ल्ड क्लास, व्हाई इज ही नॉट वर्ल्ड Bro, what क्लास। has he won? ओके, व्हाई इज रियल मैड्रिड देन आफ्टर सलीबा, देन व्हाई इज रियल मैड्रिड आफ्टर सलीबा। यार मैं वो तुमको तो एक ही बात बोल, why नहीं is he यार, प्लेयर्स not ऐसा वर्ल्ड behind क्लास Van, है। why he is he will not become behind he will Konate, become why world is he class when not he goes behind to Real Van Madrid Dijk। and wins shit. He will कि ऐसा become world थोड़ी ना class when he होता है, wins shit. ऑब्वियसली वो लोग देख रहे कुछ इसलिए तो जा रहे हैं यार। नहीं नहीं, they are seeing, He they is are a looking good at him and defender, you also know he he has he's one of the pocketed best. Salah, sorry, Haaland like anything. He is, bro, he's not only good, he is one of the best in the world right now. I would agree to that. But world class for me, मेरे दिमाग में जो definition है ना कि he has to like, और मतलब अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है with Arsenal players is it's such a good team, it's such a good क्या बोलते हैं mix of players जिसके अंदर many players like Odegaard, Saka,
सलीबा, तेरा ये, and I feel even Raya this season is showing why he is so Saliba is a good. World Cup winner, no? Hmm, I was on the bench, I think. नहीं, I am not sure. I think so. नहीं, वर्ल्ड कप विनर नहीं है. He was not यूरो in that team. यूरो में नहीं तो नहीं, नहीं था, that much I know. यूरो में भी नहीं था. He was not there in the कौन World Cup team. सलीबा? Yeah, Yeah. yeah, he's not World Cup winner. सलीबा अभी तो 20 साल का हुआ है वे. ये लोग जीते थे वर्ल्ड कप कब? 4 साल 5 साल पहले. नहीं नहीं, हाँ हाँ, 8 साल पहले. नहीं, 4 साल पहले. हाँ, 4 साल तो पहले. फिर कैसे नहीं? 6 4 साल साल हो गए पहले. भाई. 6 साल हो गए. हाँ, तो कहाँ से तब? 14-15 साल नहीं का नहीं होगा नहीं, सलीबा. सलीबा नहीं था. सलीबा नहीं था. मैं बोलता रहा हूँ, he's not won हाँ. the World Cup. So Hmm. he needs to, पता नहीं, it's just that he is that little bit some, ये सारे players में ना एक वो है कि they just need to cross, जो विजय बोलते हैं ना कि एक बार ये लोग जीत जाएंगे ना तो सारी Yeah, चीजें प्रूव हो जाएंगे. They will be proven कि exactly. हाँ, ये I जब know, लोग बोल I रहे know. थे. तुम्हारे पास वो proof नहीं है दिखाने के लिए. The point Exactly, is. there's proof of concept नहीं है अभी तक कि भाई हाँ But ये I सब है, think but Rice, I think हाँ, but I think Rice, I think ये लोग has the ability to be called world class if we put this in as a factor. exactly And exactly. I think the best accumulated squad of Arsenal is current squad. Yeah, yeah, अगर ये आज yeah. तक बोल रहा है अगर आ जाएगा तो Since the Invincibles तक मैं बोलूँ, except for that when we had Sanchez, Ozil, Cazorla, ये जब 3 players थे हमारी टीम में, डिफेंस तो तब बहुत ही घटिया थी. बट इफ एज अ बैलेंस टीम मैं देखूंगा ना, दिस इज आफ्टर द इनविंसिबल्स, दिस इज द बेस्ट टीम वी हैव हैड एज अ बैलेंस yeah, विद डिफेंस, yeah, with a I midfield, agree. with a forward. So we have got a, Defense and is plus, at its peak. Yeah, defense is at yeah, its yeah, peak. Right back, defense, left and back plus we was have an a, issue in the uh, starting, but that has also yeah, been yeah, solved. and we haven't had a good goalkeeper in a very long time, bro. Yeah, बहुत टाइम बाद we have had a good goalkeeper. yeah. uh, we have a I very can't good believe centre these are back. the same fans जो राया को पहले बोल रहे थे कि चूतिया कीपर है और अभी Bro, I फाइनली एक्सेप्ट कर bro, रहा है. यार sports is इतने an ever दो changing इतने thing. क्या बात इतने कर रहा है तू यार? इतने डोगले फैंस हैं इनके. मेरे को याद है पहले आर्टेटा को निकालने के लिए रेडी. फिर ये आई थिंक दिस इज व्हेन ही लॉस्ट फाइनल अगेंस्ट सिटी. उसके बाद हैवर्ट्स को बोलते हैं कि चूतिया साइनिंग है. अब हैवर्ट्स का चूस रहे हैं फुल ऑन. और अभी वो तेरे को मैं लास्ट बात ईयर तक बोलूं एक, वो नहीं. दिस इज दी, मैं नहीं नहीं सुनूंगा ही नहीं. नहीं तू ही नहीं बोले नहीं जा नहीं, रहा है तेरे कब को से. तू कब ही से, बोले तेरे जा रहा को है हो गया कब चुप से. कर. अब मैं बोलूंगा नहीं, मैं तेरे को नहीं. कब से देख रहा हूँ. मैं, तू जरा चिल्ला चिल्ला के जो तू करता है ना, तेरे को मैं एक सिंपल सी बात बता देता हूँ, ठीक है? सहवाग को इन इज, जब वो सबसे लोएस्ट फॉर्म में था ना, ही वाज आस्क्ड कि भाई उसको ड्रॉप करो. व्हेन दैट गाय केम बैक ना, ही ही वाज लाइक द बेस्ट ओपनर इन द वर्ल्ड, ठीक है, उस मोमेंट में. और अभी भी जब लोग अपनी वर्ल्ड टाइम ऑल टाइम 11 बनाते हैं ना, तो एवरी सिंगल कोई सब कंट्री में सब लोग कॉन्टेम्पलेट करते हैं, शुड वी पुट सहवाग इन दैट टीम? So you can, नहीं. sports is so ever changing. You can have different opinions at one point in time. You can change your opinions later. ये जो ना कि flip flop मत करो, that's an idiotic thought in an ever changing world. तो यू आर अ फ्लिप फ्लॉपर. Yeah. तो अगर if you want to tag it like that, yes I am. ओए राया को फ्लिप लास्ट ईयर तक फ्लॉपर ये लोग मुझे गाली दे प्यार रहे से थे. कर. ओए फ्लिप फ्लॉपर. राया को राया को ये लोग लास्ट ईयर गाली दे रहे थे कि रामस्डेल इतना अच्छा कीपर है. हमने पता नहीं क्यों उसका काट दिया. राया इतना अच्छा कीपर है. Ramsdale is आर्टेटा भी still a सबको very good गैस. keeper. मेरे को खत्म मुझे कर रहे थे एक्चुअली क्या वरुण. पता है, कुछ कुछ आर्सेनल फैन ऐसे हैं ना जो जंप द गन टू सून. दे डोंट गिव हाँ टाइम टू हाँ. देमसेल्फ ये आल्सो. रहा तेरे बाजू में फ्लिप फ्लॉपर है सबसे बड़ा. ओके. नहीं, आई फिर थिंक मेरे को लास्ट सीजन बोलो. से वरुण को पता चल गया है कि लाइक नहीं नहीं, मेरे साथ देवम भी लाइक बोल रहा था लास्ट कि ईयर तो क्या मैं आप बोल लोग. रहा था कि भाई हम लोग नहीं जीतने वाले, तुम लोग, और तेरे में गुदा ही नहीं है बोलने का, तेरे में गुदा ही नहीं बोले. जब मैंने बोला हार गए तो हाँ बॉटल करते, मतलब हराम जादो, मैं पहले से बोल रहा था हम नहीं जीतने वाले, फिर भी तुम लोग के कहने में बोला जीतेंगे जीतेंगे. वो तूने बोला तो था एक बार हम लोग जीत रहे. एक बार तो बोला था. हाँ, मैं जब तुम लोग सब लोग वो, मेरा लास्ट अगर लास्ट में तो टॉप यार, पे होता ना, लास्ट लास्ट में तो सब लोग ही बोल रहे थे एक जीत पॉइंट से भी जाएंगे. टॉप पे होता ना वरुण, मैं अगर अब जैसे ये लोग करते हैं ना, किसी ने मैच नहीं खेला है, ठीक है, नॉट अ सिंगल टीम हैज प्लेड अ मैच, यूनाइटेड विन देयर फर्स्ट मैच, दे गो अप एंड टॉप वे ऑफ द टॉप ऑफ द टेबल. टेबल बताओ, में. एक दिन पहले आधी रात को खेल कर आ गए ये लोग. आधी तो रात टॉप को ऑफ द खेला है मैच, तीसरे मर मैच मर में के खेल रहा जर्सी ने है. गोल मारा. और एक तो मैं वर्ल्ड नींद क्लास खराब करके स्ट्राइकर. वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर. वर्ल्ड क्लास मैं नींद गोल. खराब करके देख रहा हूँ, और अगले दिन मैं सुन रहा हूँ क्या क्या प्रेसिंग कर रहे थे हम लोग. क्या क्या
क्या बोल रहे हो प्रेसिंग तुम? अच्छा कर रहे थे हम लोग उस दिन। शट अप। एक ब्रो प्लेयर ब्रो माउंट खाली दौड़ता है, उसको प्रेसिंग नहीं बोलते। वो ब्रो अकेला दौड़ रहा है। वो माउंट पागल ब्रो हो गया कि 2 साल राहुल की पूरी एनर्जी मैं आज निकालूंगा जो मेरे को नहीं राहुल खेलने दिया। मोहित ओए भाई गाइस, बाय द वे वी दो आर मैच के क्रॉसिंग द बाद ना 1 hour मुझे ना मार्क। आई एम जर्सी गोइंग टू मोहित गो ने दो इन मैच के 5 बाद मिनट्स। तुम लोग कंटिन्यू करो। अरे मोहित ने 2 मैच के बाद क्या बोला पता है? जर्सी है ना नया बर्बटाओ हाँ। 2 मैच के बाद बॉबटा कैसा बर्बटा। है? बर्बटा बर्बटाओ प्रैक्टिस अभी भी करने लग आएगा ना गया। बर्बटा अभी भी प्रैक्टिस करने आएगा लग ना गया था। तेरे को पता है वीडियो आया था बर्बटा का, क्योंकि उसको सीरियसली लगा हैव आई लॉस्ट माय टच और व्हाट वेंचर आई मीन कंपेयर्ड टू जर्सी, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। वो वॉल में मार मार के ना फर्स्ट टच प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन नो जर्सी कांट डू इट। ब्रो इट्स जर्सी लाइक स्टिल कांट डू इट। ridiculous. It was यार हम लोग ridiculous. चिल स्ट्रीम बोल के वापस फुटबॉल की बातें करें तो तुम दोनों चूते हो, और वरुण सबसे पर बड़ा। यार ये आर्टेटा का ये भैंचोद चिल मुंह में टॉपिक्स ही लेके तो उसने है। 20 मिनट बात करी है इसने आर्टेटा की। मैंने इसको बोला था मत डोंट पर ये स्टार्ट दिस चिल टॉपिक टॉपिक्स ही है गाइस। ये सी वी कैन नॉट डिस्कस दिस, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, वी कैन नॉट डिस्कस दिस इन प्रीव्यू एंड रिव्यू यार। वी कैन नॉट डू दिस। एंड मैं यही तो करना चाहता हूँ वरुण के साथ, क्योंकि यार कुछ कुछ चीजें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव इट इन रिकॉर्ड। यार एक तो ये शंकर एंड सूद हम कर देते तू बीच में आ गया साला छोड़ हाँ, दे इसे तू नाम ये शंकर सूद ही रख दो। हाँ ये भी साला सूदी है तो उसको भी मैं भूल नहीं सकता शंकर एंड और सूट्स। और अपेरेंटली हर शंकर एंड सूद वीडियो में मैं तो हुई। हाँ शंकर एंड सूट्स हाँ बेसिकली शंकर सूट्स। एंड सूद यस ट्रू बट बट नहीं, तुम्हारे दोनों के अकेले, आई मीन रोमांस को मैं अकेला छोड़ दूंगा अभी 3-4 मिनट में, मैं जा रहा हूँ। तुम लोग कर लो फिर। हम लोग भी आई थिंक तब रैप अप ही कर लेंगे इन 5 minutes। लेट्स एक जस्ट घंटे से राहुल बकचोदी कर there रहे is हैं हम लोग। राहुल there is लेट्स रैप nothing इट अप there is yeah nothing much to discuss, but guys, do let us know your yeah feel Do to let us dislike the know video, if you your want to feel see to me alone playing games and you don't want these two fuckers, so I will make guys my own dislike business. the video if you don't वैसे like the video. We have been very open about it, वैसे but भी do I've been share a getting a like lot if of you really hints. like it. वैसे भी I'm getting a lot of hints from my group itself that I'm gonna create a new channel of my own. I might just do that. Yeah, feel free to subscribe to Mohit's guys channel I'm saying whenever it you. here Angry Mo is an intellectual property of football Banter X so he cannot start a channel for Angry Mo Hilarious mo ले ले तू. But as I was saying, guys, if you don't like Do this let us video, know. अबे बोलने देना मोहित यार, तू बीच में डू 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 करके आ जाता है. Okay, so guys, if you didn't like particular format, do leave a dislike. We'll open, like open hand से हम लोग accept कर You know, लेंगे. you don't And say things like this because Trooper will actually see this और वो actually dislike कराएगा, it's मतलब 10 okay. लोगों से ढूंढ के। It's okay. Trooper भी एक हमारा एक audience and we want to keep everyone happy. But if you yeah guys want to watch, live streaming of games like जो मोहित बता रहा था, to leave a comment. FC25 का तुम्हें देखना है तो हम लोग कर लेंगे, इन्वेस्ट कर लेंगे, हम लोग खरीद लेंगे, हम लोग करेंगे, अरे बाय द वे खेलेंगे, राहुल, और इवन हम आई लोग विल डू एक दैट. चीज कर सकते हैं, एक चीज कर क्या सकते हैं हम लोग. There क्या? is this game called Until Dawn. We can get हाँ, the entire panel here and we can play that या game together. One guy can play and the others choose कि क्या करना है. आई थिंक वो मिक्स एंड प्ले भी कर सकते हैं उसमें. इट्स नॉट नेसेसरी एवरीबॉडी हैज टू प्ले इन दैट, है ना? सबके पास गेम होने मतलब की जरूरत नहीं है ना. सबके पास गेम होने की अरे उसमें नहीं, जरूरत नहीं है ना. वन सी सो फॉर एग्जांपल वरुण प्लेज द गेम, उसमें हाँ चॉइसेस आएगी गेम में कि यहाँ जाना है, वहां जाना है, इसको मारना हाँ है, इसको हाँ, नहीं मारना है. मैं वही बोल रहा तो हूँ. एक जन खाली खेल सकता है उसमें, देन दे कैन हाँ, डू इट. या दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. वी कैन टेक वोट्स कि क्या करना है, जल्दी बताओ. एग्जैक्टली. ऐसा. And हाँ. we can have this chat section also, guys. We can use it. थोड़ा सपोर्ट करो यार, थोड़ा लिखो यार. तुम इतने बैठ के लड़कियों के पीछे व्हाट्सएप मैसेजेस करते हो, यहाँ पे भी थोड़े डाल दो. इट विल बी मोर मीनिंगफुल. By the way, guys, we're hitting 83. We are hitting 85 subscribers. We are on 83. The target is to reach 100. I think मेरे को लग रहा है वो अभी टारगेट थोड़ा दूर पड़ रहा है. मेरे को ऐसा लग रहा है बहुत वही स्लो हो 15 गए हैं. सब्सक्राइबर्स ऐड करने हैं और probably 15 नहीं, let's 17 subscribers. We have to add 17 subscribers. Guys, please, Guys, like, bring your family. we got to know that there are around 30 people who are watching the stream who are not subscribed. Guys, please subscribe. It's not that stat. I'll tell you later what's the exact stat. मेरे को record में नहीं बोलना is the other thing, but
गाइस सब्सक्राइब करो, लाइक करो। अभी मैजिकली लाइक एंड सब्सक्राइब आएगा नीचे, मोहित के नीचे। तुम बस दिखना, नहीं थ्री डाल रहा मैं। 2 1। So do that, and Yeah. it was a chill stream, and we are signing off, guys. Thank you so much. This is Ta-da-da, Rahul. This is Varun. This ta-da, is Mo. Enjoy the ta-da.